ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम CompTIA A+ ट्रेनिंग का चैप्टर नंबर 18 कंटिन्यू करेंगे। दिस ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड बाय लॉयल टेक एंड सिक्योरिटी। इस चैप्टर में वी विल बी कवरिंग मैक ओएस पार्ट्स ऑफ इट एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, कोई भी questions हो, if you have any concerns, comments or anything, make sure to submit the the comments in the comment section, or आप chat के अंदर भी type कर सकते हैं for immediate response. And make sure to like and subscribe the video so you are notified for any new future videos. Okay, so let's start with chapter number 18, Mac OS and Linux. Objectives जो हम cover करेंगे, we will identify common features and functionality of the Mac OS and Linux operating system. जो basic उसके functionalities है हम उसको identify करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसकी best practices क्या है, scheduled backups, scheduled disk maintenance, system updates, app store, etc., patch management, driver firmware updates, antivirus and anti-malware updates. कैसे होते हैं ये सब, and we will talk about that. Storage mechanism. Okay, so working copies, sometimes referred to as a shadow copies, are a partial or full backups that are kept at the computer center for immediate recovery purposes. Working copies, जो basically as a backup we can use that. It's considered either a partial backup या full backup. उसमें बेसिकली क्या होता है, इट क्रिएट्स अ शेडो कॉपी। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं विंडोज़ का, उसके अंदर हमने देखा होगा वो रिकवरी का जो इमेज होता है, इन लिनक्स दे कॉल इट शेडो कॉपीज। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंटेन्ड इन शेडो कॉपीज इन द इवेंट समथिंग वर टू crash. So most likely the most recent backups that have been made is available on the top. जैसे अगर आपको याद हो, विंडोज़ के अंदर हम रिकवरी के अंदर जाते थे, वुड गिव अस ए टाइमलाइन कि एक हफ्ते पहले का बैकअप है, उसके 2 महीने का बैकअप है, विच एवर यू वांट टू रिकवर you would click on that and then you can get that going. So this is in Linux or the Unix OS. It's considered a shadow copies. Another thing is called journal file system, which is also a part of a storage. JFS, जो JFS जो है वो एक extension है। जैसे हम picture का extension होता है .jpg for example. This is an extension, something similar to FAT32 या NTFS जो कि Windows के अंदर होता है NTFS। Linux के अंदर it's called JFS, Journal File System. It includes a log file of all changes and transactions that have occurred within a set period of time, such as the last few hours. ये basically एक log create कर देता है जिसके अंदर it gives you all this information. If a crash occurs, the OS can check the log file to see which transactions have been committed and which ones have not. तो basically विंडोज़ के अंदर दे कॉल दिस काइंड ऑफ लाइक इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर जो है उसके अंदर सारी लॉग्स होती है, कंप्यूटर कब क्रैश हुआ, कंप्यूटर कब बूट हुआ, कंप्यूटर क्रैश से वापस ऑन कब हुआ, वो सब जो इवेंट व्यूअर की लॉग फाइल में जाता है वो इसी लॉग फाइल के अंदर जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड ए JFS लॉग फाइल फॉर लिनक्स और मैक OS. एंड देन सिस्टम इज रिस्टोर्ड टू प्री क्रैश स्टेट। और इसके अंदर जो बैकअप जो मैंने अभी पिछले में बताया, यहाँ पे जो बैकअप होता है, जो शेडो कॉपीज जो बनाता है पार्शियल या फुल बैकअप, जहाँ पे अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है, सो यू वांट टू लुक फॉर द JFS फाइल बिकॉज दैट इज द फाइल which holds the data to restore the computer from the crash state. फिर दूसरा जो स्टोरेज मैकेनिज्म होता है वो होता है ऑन साइट स्टोरेज, विच यूजुअली रिफर्स टू अ लोकेशन ऑन द साइट ऑफ द कंप्यूटर center that is used to store information locally.
ऑन साइट जैसे टेप्स हो गई, cartridges kept in fireproof container. Tapes तो no one uses anymore, but when anyone talks about on site storage, उसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपके कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पे आपके सर्वर्स हैं लगे हुए, इट कुड बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहाँ पे भी हैं उसी जगह के अंदर आपके पास उसी सर्वर के और उसी सिस्टम के बैकअप्स भी हैं. दैट्स कॉल्ड ऑन साइट बैकअप, क्योंकि उसी साइट के ऊपर जहाँ पे सर्वर्स और सब लगे हुए हैं, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, वहाँ पे ही आप उसकी एक अलग से कॉपी रखते हैं. यू कैन पुट इट इन NAS और सर्वर जहाँ पे भी, बट दैट इज कॉल्ड एन ऑन साइट स्टोरेज. सो ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज when you work in a environment like this, on site and off site will be used a lot, क्योंकि next section जो है it's about off site. Off-site storage जो है is refers to a location away from the computer center where paper copies and backup media are kept. They're talking about paper copies here, but in our type of business we don't have any paper copies. Most of them is all backed up on a media. Media meaning hard drive, or it could be CDs, DVDs, it could be tape. You know the tapes, मैंने I think पहले आपको बताया था वो tapes कैसे दिखती हैं. So वैसे तो उसी चीज़ को आप कहीं और थर्ड लोकेशन में अगर उसको डालते हैं, उसको बैकअप करते हैं, सो दैट बिकम्स एन ऑफ साइट स्टोरेज. ऑन साइट स्टोरेज मतलब ये कि आप अपने ऑफिस के अंदर ही या अपने डेटा सेंटर के अंदर ही उसको बैकअप करें, तो वो ऑन साइट स्टोरेज हो गया. पर अगर आप अपने ऑफिस से बाहर किसी क्लाउड में करें या किसी और लोकेशन में करें, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एन ऑफ साइट स्टोरेज. Now I also want to add you can also do a cloud storage. So technically speaking, cloud storage is an off-site storage. फिर scheduled maintenance. ये मेंटेनेंस हमारा सेम चीज़ विंडोज़ के अंदर भी होता है, बट Mac OS and Linux has its own routine of maintenance. So the file system used on Mac OS and Linux rarely, if ever, need to be defragmented. Windows के अंदर there is an option to defrag the file systems. Defragmentation का basically मतलब ये है कि आप पूरा एक मिसाल ले लें, एक रूम है, उसके अंदर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और वो कचरा जो है बिखरा हुआ है, तो आप उस रूम के अंदर वॉक नहीं कर सकेंगे. ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, सब जगह पड़ा हुआ है, उस रूम में आप वॉक नहीं कर सकेंगे. डीफ्रैग मतलब ये हो गया कि उसको ऑर्गेनाइज करने का. अभी उसी रूम के अंदर आप शेल्फ लगा दें और प्रॉपरली सारा ज़मीन से कचरा उठा के अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लें, कंप्रेस कर करके उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो रूम में चलने की जगह हो जाएगी, विच मीन्स आप रूम में अब चल सकते हैं. तो डीफ्रैग का मतलब यही है कि it actually organizes your entire data, so then your computer runs faster, because अभी कंप्यूटर को चलने की ज़्यादा जगह मिल गई, so it can work faster. Now both ext3 and ext4 have on the fly defragmentation methods and implement file allocation strategies different than their traditional Windows counterparts. ext3 and ext4 जो है, जैसे मैंने बताया, विंडोज़ के अंदर NTFS एंड FAT32 के एक्सटेंशंस होते हैं, पार्टीशंस होते हैं. ये लिनक्स के अंदर इट्स कॉल्ड बेसिकली ext3 एंड ext4. इट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल पार्टीशन सिस्टम. बट इसके अंदर एज दे आर सेइंग दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट देन हाउ विंडोज़ डज इट. विंडोज़ के अंदर आपको मैन्युअली डू दी डिफ्रैगमेंटेशन करनी पड़ती है, बट in Linux that can happen on the fly. While you're working, it can happen at the same time. Now defrag is not a maintenance routine in OS and Linux, Mac OS and Linux. It's not considered a maintenance thing, because you actually don't need that in Linux. क्योंकि लिनक्स के अंदर जो है it automatically उसको defrag करता रहता है, it's built for that. Windows is not. So that's why in Windows, for maintenance purposes, you're supposed to defrag your system once in a while, once a month or whatever. If your computer is slow ho raha hai, then you should defrag it. And later on I will show you how we can do that as well. System updates and app stores. Keep the operating system current and updated,
ऐप स्टोर represents a location where you can also find updates. So ये ऐप स्टोर जो है बेसिक कॉमन इसकी एग्जांपल है. आपके पास आईफोन है, जो आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है that is an OS, that we call that iOS, right? Mac OS को हम Mac OS क्यों बोलते हैं? Because it's running on MacBook, right? But जो OS है ना, that's basically an Apple product or Apple operating system. है तो Linux ही, these are all Linux, but they tweak it अपने हिसाब से and then they change the code and then it becomes Mac OS. जो mother of this is basically Unix and these other languages, but Linux is commonly known as Mac OS and other like Kali Linux and things like that. But what I'm getting at, when they're talking about app store here, they're talking about as simple as an iPhone having an app store. हम आईफोन में जाते हैं, उसके अंदर ऐप स्टोर होता है, जैसे कि एंड्रॉयड के फ़ोन में होता है गूगल प्ले स्टोर. सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है. और लिनक्स के अंदर, ये तो मैंने मैक ओएस की बात कर ली, लिनक्स के अंदर सिस्टम अपडेट्स होता है. जैसे विंडोज़ के अंदर नहीं विंडोज़ अपडेट होते हैं, वैसे ही लिनक्स के अंदर लिनक्स के अपडेट्स होते हैं. And you have to once in a while, you have to run those updates. वो सिस्टम को पैचेस करते हैं, सिस्टम की जो मेन फाइल्स होती हैं, कर्नल की जो फाइल होती है उसको पैच करते हैं. एंड इट ऑल्सो अपडेट्स योर एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशंस आपके इंस्टॉल्ड हुए हों लिनक्स पे, उसको भी वो अपडेट करता है. Patch management. So updates fix many things while patches fix a few. Multiple patches are rolled into update. Advanced package tool can be useful in getting the patches from a repository site and downloading from the installation. Command is apt-get. Okay. So basically what they're saying is that the पैचेस जो है, सो देयर्स टू थिंग्स, राइट. मैं विंडोज़ के हिसाब से बताता हूँ. अगर आपको पता हो विंडोज़ के अंदर कभी कभी पैचेस निकलते थे केबी आर्टिकल के ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ मैलवेयर रिमूवर एक टूल निकला था, ठीक है. फ्रॉम टाइम टू टाइम उसके वो लोग पैचेस इशू करते थे जो कि वो अपडेट के अंदर आते थे. बट इफ़ यू डोंट वांट अपडेट योर एंटायर सिस्टम, आप खाली उस पैच को रन करेंगे तो खाली जो वो मैलवेयर का सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा, पूरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपडेट नहीं होगा. पर इसी पैचेस को हम पूरा कंबाइन कर दें, देन इट बिकम्स एन अपडेट फॉर एवरीथिंग. अपडेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, व्हाटएवर जो भी है आपके पास, सिस्टम फाइल्स, कर्नल्स, malware रिमूवर, उस सब को आप कंबाइन कर दें and put it under one window or one umbrella, that becomes an update. अब Windows के अंदर तो we simply go and we click on Windows Update and boom, and it starts looking for the updates. Well, Linux doesn't work like that. Linux, you have to type this command apt-get. ये आधी कमांड है. Actually it's more than that. You type in apt-get upgrade. You type in update first and then it will find all the updates, and then you type in upgrade and it will do the update. So थोड़ा manual process है. So not many people are familiar with that, and hopefully we will see if we can cover that as well. Now the tools. Backup and time machine. That is an application from Apple that can be used to make backups of various types of incremental, full and partial backups. Snapshots, basically I'm gonna get to that, but जो backup and time machine है, it's nothing nothing too crazy. It's similar to what कोई भी बैकअप सिस्टम आप ले लें, जो टास्क स्केड्यूलर था हमने उसमें बताया था, उसके अंदर यू कैन सेट अप अ बैकअप, या मैक्रियम रिफ्लेक्ट मैंने लास्ट टाइम उसके बारे में बात की थी. मैक्रियम रिफ्लेक्ट इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर टू बैकअप स्टफ. सेम थिंग, इंक्रीमेंटल बैकअप कर सकते हैं, फुल बैकअप कर सकते हैं. एप्पल हैज़ देयर ओन टूल, दे कॉल इट टाइम मशीन. The word actually throws you off. I mean time machine, okay, whatever, but it's a backup system. Okay, now the next is restore and snapshot. Snapshots are archives of key files and settings as they exist at a moment in time, subset of an image. So snapshot जो है ना, it's similar to an image. जैसे मैक्रियम रिफ्लेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले थे पिछली वीडियो में, हम पूरा का पूरा विंडोज़ को कॉपी करके दूसरी जगह
पेस्ट करने वाले थे, ठीक है ना, दैट्स इमेजिंग। स्नैपशॉट जो है ना वो थोड़ा सा, जो जैसे हम 1 घंटे पहले हम काम कर रहे हैं, सो स्नैपशॉट विल बैकअप दैट 1 आवर की जो विंडो है उसको बैकअप कर लेगा, पिछले 1 आवर की या पिछले 30 मिनट्स की। स्नैपशॉट इज लाइक क्विक इमेज बैकअप, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। इट्स अ, ये पूरा बैकअप नहीं देता है आपको स्नैपशॉट, इट ओनली गिव्स यू ए क्विक बैकअप, अ क्विक सिंपल बैकअप, बट इट डज नॉट बैकअप एवरीथिंग, ठीक है। नाउ इमेज रिकवरी, इट्स लार्जर देन स्नैपशॉट्स, जैसे मैंने बताया वो लार्ज होती है फाइल। इट इंक्लूड्स ऑल द फाइल्स इन द सिस्टम एट द मोमेंट इन टाइम। तो यही मेन डिफरेंस है। स्नैपशॉट जो है वो उस टाइम का स्नैपशॉट लेता है, वो पूरे विंडोज का स्नैपशॉट नहीं लेता है। तो अगर आपका लेट्स से पूरा का पूरा विंडोज ही खराब हो गया तो स्नैपशॉट इज नॉट गोना हेल्प यू। स्नैपशॉट किस में हेल्प करता है? मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी 10 बजे फॉर एग्जांपल, मैं काम कर रहा हूँ 11 बजे तक मैंने काम किया, 11 बजे मुझे पता चला कि यार मैंने जो 10 साढ़े 10 बजे जो काम मैंने किया था उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है, मुझे आई नीड टू रिवर्ट बैक टू माई ओल्ड चेंजेस। वेल आई कैन यूज स्नैपशॉट क्विकली। मैं स्नैपशॉट में 2-3 क्लिक करूंगा, बूम बूम बूम, एंड इट्स गोना गो बैक टू दी 10 o'clock टाइम, व्हाटएवर जो सेटिंग्स थी 10 o'clock की टाइम के अंदर वो चली जाएगी। सो दैट इज अ स्नैपशॉट। इमेज रिकवरी इज नॉट लाइक दैट। इमेज रिकवरी के अंदर बेसिकली आप अगर 10 बजे मैंने काम शुरू किया और 11 बजे या 12 बजे मुझे पता चला कि ये कुछ ख़राब है, आई कैन नॉट जस्ट click 1-2 buttons and then do the entire image recovery. Image recovery के लिए I need to go through the entire process of copying the old files and putting in new files back. So इसके भी ups and downs है, snapshots के भी ups and downs है। Quick recovery के लिए आप देख रहे हैं snapshot is a good option. For a full recovery you're looking for an image recovery. Okay, then disk maintenance utilities जो है du, if you type in du in Mac OS should show you disk space in use. If you type in -df it will show you free disk space, and if you type in fs checks and repairs disk, ये उसकी commands है Mac OS की. Then we have a shell which is also commonly known as terminal. Terminal is basically a command line interface in Linux, is usually reached through a terminal session. Windows के अंदर हम टाइप करते हैं cmd, command prompt. ब्लैक विंडो जो आती है वो command prompt विंडोज की होती है, उसको आप टर्मिनल बोल सकते हैं। टर्मिनल इज अ सिंपल वर्ड। बेसिकली टर्मिनल का मतलब ये है जो आप हाथ से टाइप करके विंडोज को ऑपरेट करें, which is called command line interface, also known as CLI. आपके काम के अंदर when you go and work in system admin or these type of jobs, people will mostly say, oh, let's do things over CLI. So you need to understand what CLI means. It basically means terminal, and basically means command prompt. Shell, in the other word, it's the interpreter between the user and operating system within the terminal. So shell, you can consider that a command, क्योंकि हम जो कमांड टाइप करते हैं इट उसको ट्रांसलेट करता है। जो हमने कमांड टाइप की cd, फिर हमने एंटर किया, तो cd को अपने कमांड को अपने बाइनरी के अंदर चेंज करके उसको बोलता है कि भाई चेंज डायरेक्टरी नाउ। सो दैट इज द शेल कमांड्स। वन ऑफ द एग्जांपल दे हैव गिवन हियर इज OpenSSH और bash. bash जो है लिनक्स के अंदर यूज होती है बोर्न अगेंस्ट शेल। बैश की जो होती है वो फाइल्स होती है, जैसे विंडोज के अंदर .exe की फाइल होती है वैसे ही लिनक्स के अंदर .bash की फाइल होती है which you can run in Linux. Next we have screen sharing. This feature is built into Mac OS X and it allows you to share your screen with others. बहुत ही basic concept है. This is something similar to FaceTime. Not exactly the same thing but similar. Okay. उसमें Mac OS के अंदर एक फीचर है कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं with the other user. That's it. Very simple. Okay, next is force quit. There are few occasions where an application can become a runaway. When that happens with the Mac OS, you can use force quit to force it to close. जैसे कि कभी-कभी कोई एप्लीकेशन स्टक हो जाती है
कोई मूव ही नहीं हो रही, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. सो इन दैट केस आप उसको फोर्सफुली क्विट कर सकते हैं. जैसे कि हम विंडोज़ के अंदर टास्क बार में जाके उसको किल कर देते हैं, वैसे ही मैक ओएस के अंदर यू कैन डू फोर्स क्विट. हाउ डू यू डू दैट इन लिनक्स? लिनक्स के अंदर यू कैन किल दैट प्रोसेस. देयर इज अ कमांड फॉर दैट. आप वो किल टाइप करें एंड देन यू टाइप इन दैट प्रोसेस आईडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड PID, प्रोसेस आईडी. उसका एक नंबर आता है, यू पुट दैट नंबर इन एंड देन यू विल किल दैट प्रोसेस बाय फोर्स. Now, Mac OS features: multiple desktops, mission control, switch between apps and desktops. So, all open windows and spaces are shown grouped by app and you can choose between them. तो अगर आपको पता हो विंडोज़ 8 के अंदर विंडोज़ वालों ने ये दिस इज़ व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू. मैक ऑलरेडी हैड दैट ऑप्शन. उसमें आप है ना विंडो स्विच कर सकते हैं. ये देखें आप जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, ये विंडोज़ 8 के अंदर आया था. देखें ये कैसे ये तीन छोटी सी विंडो शो कर रही है. ठीक है, आई एम गोना प्रेस एस्केप, इज गोना गो बैक टू द सेम वन. ये मैं कैसे लेके आया? मैंने प्रेस किया विंडोज़ की एंड टैब की मैंने प्रेस की और मैं विंडोज़ की दबा के रखी मैंने. तो वो मुझे जितनी भी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारी शो कर देगा. And then I can press tab again if I want and it will take me to the next window. Okay, so Mac OS के अंदर ये फीचर काफ़ी टाइम से built in है. You can move or you can choose your screen between one screen to the other screen doing these. Well, they have different keys, but they have an option built into Mac OS, an old system. Keychain. Keychain is called is a basically password management system. It allows you to store passwords for websites, mail servers, Wi-Fi, and so forth. अब कीचेन एक मैक ओएस के अंदर फीचर है जिसके अंदर आप अपने सारे पासवर्ड सेव कर सकते हैं, वेबसाइट्स के, मेल के, वाईफाई के, एंड एनीथिंग एल्स यू वांट. दिस इज सिमिलर टू की पास. अगर आप लोगों ने की पास यूज़ किया है, इट्स सिमिलर टू दैट. और यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दैट एज गूगल के अंदर जो अब पासवर्ड यूज सेव करते हैं, समथिंग सिमिलर. बट ये की चेन का उनका एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्ट इन है. Spotlight. Spotlight is basically search for documents, images, apps. Spotlight is as simple as search for documents. हम Windows के अंदर we go and we type in for search. It shows you the list. In Mac OS, that's considered Spotlight. Spotlight is an option where you can search. आप search documents and जो भी है आप type करें and it will search through the index of documents or through the index of images or whatever you have. iCloud, it's a small amount. It sometimes is free up to a small amount, but anything beyond that, I think what 1 GB or something, they start charging you. So iCloud जो है वो Mac OS के अंदर भी इसका ऑप्शन है and Apple iPhone के अंदर भी है. ये iCloud को आप ऐसे ही समझ लें जैसे गूगल की गूगल ड्राइव हो गई और माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव हो गई. तो एप्पल की क्या है? iCloud. सो सारी कंपनियों के कुछ ना कुछ क्लाउड फीचर्स हैं. Gestures. With Apple products, it is possible to scroll, tap, pinch, and swipe to interact with Mac or other products in a way that it is intended to be natural and intuitive. Again, same चीज़ ये Windows 8 के अंदर करने की कोशिश की. Apple has been doing it for a while. एप्पल के अंदर अब मैक ओएस हो या आईफोन हो जो भी हो, आप उसको पिंच करेंगे दो उंगलियों को ऐसे करके स्क्रीन के ऊपर, तो वो उसको जूम आउट कर देगा. उसको आप पिंच आउट करेंगे वो उसको जूम इन कर देगा. आप उसको स्क्रॉल करेंगे उंगली से तो सेकंड पेज के ऊपर चला जाएगा. ये सारे ऑप्शन मैक ओएस के अंदर पहले से हैं. विंडोज़ 8 के अंदर ये इजाद हुए आना शुरू हो गए एंड देन दे स्टार्टेड गोइंग अप विद इंट्रोड्यूसिंग द टैबलेट मोड इन विंडोज़ 8. फिर वो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 8 के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया. फिर यू कैन स्टार्ट डाउनलोडिंग द एप्स. दैट वाज द होल आइडिया. दे वर ट्राइंग टू कम्पीट विद एप्पल. ठीक है.
Then we have Finder. Browse through folders and find files, disk, apps, etc. So folder is to OS X what Windows Explorer is to Windows 7. Finder जो है is like folder एक्सप्लोरर का जो फोल्डर होता है, जैसे विंडोज़ के अंदर वो नहीं येलो वाला आइकॉन बना हुआ होता है नीचे फोल्डर का, फिर आप वो खोलें तो वो आपको बेसिकली टेक्स यू टू द सी ड्राइव. लेट मी इट इज़ एज सिंपल एज ये फोल्डर आप जाइए, दिस इज़ अ फोल्डर राइट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. दे कॉल दैट फाइंडर इन मैक ओएस. Then we have remote disk. Access files on a disk in another machine. This Mac OS X feature lets you access files on a CD or DVD installed in one machine on a remote machine. So remote disk है basically you can access दूसरे computer, दूसरे Mac OS की CD drive through a different computer. It's a pretty neat feature, but I don't think it's used anymore. डॉक जो है वो इट्स अ सेट ऑफ आइकॉन्स जो नीचे जो एप्पल के अंदर जो नीचे आता है पूरी एक टास्क बार, उसके अंदर जो आइकॉन्स होते हैं दैट्स दे कॉल इट डॉक. बूट कैंप. चूज ओएस एज यू बूट. एप्पल के अंदर ये सेम फीचर है. इफ यू हैव मल्टीपल ओएस यू कैन चूज विच ओएस यू वांट टू बूट. और ये है आईपैड के जो ये पुराना आईपैड का पिक्चर है. इसके अंदर इफ यू सी दिस राइट हियर, दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग जेस्चर्स. यू कैन टर्न इट ऑन एंड ऑफ. मल्टीटास्किंग जेस्चर्स इज बेसिकली स्वाइप करें, स्वाइप अप करें, स्वाइप डाउन करें, पिंच करें, जो भी. दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन iPad or the Mac OS. Shell syntax. Syntax also known as the shell commands. Okay. अब ये जो है basically they're just talking about how you can type in the commands. Now remember, not everyone can remember all the commands in Linux. Linux has a way you can search for help of the commands. And remind me, I will, when we do the lab after this, I will show you how you can look at the help section of that. So whatever command you type in the option 1, option 2. Option 1 meaning uske andar you can type in, let's say, nslookup space -n. That -n is considered option 1. Space -p, that -p is considered option 2. option का मतलब इधर ये है कि आप क्या चीज सर्च करना चाह रहे हैं और क्या फिल्टर करना चाह रहे हैं आप. That's the option. More option you put, the more filter you're creating. Then they're saying blank space after command and between options. Every option should have a space in between. एक ऑप्शन डाला -n, फिर आप उसके बाद -p नहीं डाल सकते. You need a space. Basically that's what they're saying. If an option contains spaces, you put that option inside quotation marks. For example, ये emet जो लिखा हुआ है emet doolani, ये एक फाइल है, बट ये एक ही फाइल के अंदर देखें बीच में स्पेस है. तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इमेट को अलग लिखें, कोटेशन लगा दें, और फिर डुलेनी को अलग लिखें और कोटेशन लगा दें. दैट्स नॉट गोना वर्क बिकॉज दिस इज वन फाइल. यू नीड टू पुट दैट इन कोटेशन मार्क्स, तभी वो उसको रीड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. If a command is too long to fit on a single line, you can press the backslash key. ये जो है backslash की, अगर कमांड बहुत ही लंबी है तो आप ये backslash खाली की है, ये parentheses नहीं, ये जो brackets है वो नहीं, ये जो backslash है you can put that followed by enter. Meaning अगर कमांड बहुत लंबी है और यहाँ पे नहीं आ रही है तो आप लास्ट के अंदर वो स्लैश लगा दे, एंटर हिट करेंगे तो वो कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और फिर आप वो अपनी कमांड को कंटिन्यू करेंगे. सो इट विल बी कंसिडर्ड वन कमांड ऑल द वे. इट विल बी कंसिडर्ड वन सिंगल कमांड. Okay. Concatenate string together several shorter commands on a single line by separating the commands with semicolons. अब इसके अंदर देखें, ये एग्जाम्पल में बेसिकली ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप तीन कमांड को एक साथ भी मर्ज कर सकते हैं. ये तीनों कमांड के तीन अलग अलग फंक्शन हैं.
cd means change directory, ls means list files or list or show hidden files, because यहाँ पे जो hyphen l show कर रहा है ना, it shows all the files. तो ls का मकसद है to show the files and the directories. और pw का मतलब है show present working directory, कि अभी अभी कौन सी डायरेक्टरी में. तो ये तीन डिफरेंट कमांड है और ये तीनों के डिफरेंट आउटपुट्स हैं. यूजुअली हम सोचते हैं कि यार एक साथ इतनी सारी कमांड्स हम टाइप नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपको करनी हो यू कैन टाइप इन सेमीकोलन followed by the next command, semicolon, and then followed by the next command. This should show you all three outputs. Now Linux supports the concept of a current directory, which is the directory on which all files and directory command operates, जो कि pwd है, which is this last one right here. Okay, displays the current working directory. Current directory is the home directory when you just log in. जैसे ही आप लिनक्स के अंदर लॉग इन होंगे तो वो आपको एक डायरेक्टरी के अंदर ही से ही स्टार्ट करेगा. वो जो इनिशियल जो डायरेक्टरी होती है ना, दैट इज कॉल्ड द होम डायरेक्टरी. वो आपकी प्राइमरी डायरेक्टरी है, आप वहां से ही शुरू करेंगे. देन फ्रॉम देयर यू कैन मूव ऑन टू वेयरएवर यू वांट टू गो. नाउ जैसे कि मैंने बताया, pwd जो है वो शोज द करंट डायरेक्टरी यू आर इन. cd जो है it change the current directory. chmod is change file permission. You can think of this as change mod. ये जो फाइल की परमिशन होती है ना, each file permission you can change it using chmod, and then you have to type in the numbers. We will get to that when we do the practical. chown change the file owner and group. अब अगर आपको याद हो, विंडोज के अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट हम विंडोज के अंदर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट, कॉपी, एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दैट बाय यूजिंग अ माउस. लिनक्स के अंदर you do it this way. Linux also has the GUI version, but this is the bare metal Linux आप सब टाइप करके यूज कर सकते हैं. तो chown changes the file owner and group. cp जो है it initiates the file copy. विंडोज के अंदर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी, एंड देन गो समवेयर एल्स, क्लिक पेस्ट. दिस इज द सेम थिंग, बट हम ये टाइप करके करते हैं. ls जो है, मैंने जैसे कि मैंने बताया, डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी, फाइल्स, डायरेक्टरी, व्हाटएवर इज इनसाइड. mkdir क्रिएट्स अ डायरेक्टरी. mv जो है वो मूव करता है यूजुअली अ फाइल. rm remove which deletes the file. ओके ये सारी जो फाइल हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर देयर इज सम सिमिलरिटीज हियर इन कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे कि mkdir will work, cd will work in command, ls will not work, I believe rm will also work, mv don't work. I think you have to type in copy in command prompt, but there are some similarities. Okay, ls तो आपको पता है कि क्या करता है. अगर आप ls के आगे -f लगा देते हैं, it means the directory name appears with / appended to them. File name appears as is. Indicates that file is a link, refers to another file, shortcut refers to an executable file. So अगर आप ये f लगा देते हैं ना, तो जो भी फाइल आपको दिखेगी स्लैश के साथ, वो उसको अपेंड कर देगा, मतलब उसको मर्ज कर देगा ना. फाइल नेम्स जो कि अपीयर करेंगी ये ऐड साइन के साथ, वो इंडिकेट करती हैं कि ये फाइल का एक लिंक है. जो भी फाइल ये ऐड के साइन के साथ अपीयर करेगी, और जो भी फाइल ये स्टार के साथ अपीयर करेगी जब हम ये ls-f करेंगे, वो जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मीनिंग वो मेन प्राइमरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है टू रन दी ऐप और दी सॉफ्टवेयर. ये मोस्टली याद रखने की चीज़ें हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल डोंट रिमेंबर. द ओनली थिंग इज आप बार बार इसको ट्राई करें, देन यू विल लर्न अबाउट इट, अभी वही ls के सामने आप डाल दें ls-l, सो डायरेक्टरी लिस्टिंग इन कॉलम्स विद मोर इन्फो. तो ये इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता है. So what I'm gonna do right now, I want to show you some
I want to show you some side by side. Let me see. I'm going to show you some side by side practical on that. So जितनी भी हम command के बारे में learn कर रहे हैं, you can see it at the same time. अच्छा जी, तो हम इसमें से लिनक्स का सर्वर उठाते हैं. लेट्स सी, मेरे पास लिनक्स का है अभी. आई हैव कैली लिनक्स. दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिनक्स फ्लेवर, बट आई थिंक वी शुड बी एबल टू वर्क ऑन इट. लेट्स सी. Okay, let's see if we can log in. Let's undock this, make it big. Let's see, full screen. Full screen is fine. ओके जी, ये है कैली लिनक्स. मैं आई एम गोना मूव गो बैक टू इस जो हम चैप्टर रन कर रहे थे. मैं वन से वापस स्टार्ट, वन से नहीं, सेकंड से स्टार्ट करूँगा. और मैं जितनी अभी तक जितनी कवर की हुई हैं कमांड्स एंड स्टफ, वी विल टाइप इट इन हियर एंड देन वी विल लर्न दैट वे क्विकली. ये जो ब्लैक आइकॉन आपको शो कर रहा है, दिस इज द टर्मिनल राइट हियर. वेरी सिमिलर टू कमांड प्रॉम्प्ट, नथिंग, जस्ट थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट अदर देन दैट दिस इज सिमिलर. और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें ये मुझे कैली के अंदर शो कर रहा है. दिस इज द होम डायरेक्टरी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी गो टू द टॉप ऑन द अदर स्क्रीन. And I want to see if I can show you command. Okay, फर्स्ट कमांड के बारे में हमने बात जो की थी वो थी अपडेट. ठीक है ना. और ये CompTIA के अंदर उन्होंने मेंशन की थी. अब आप टाइप करें कमांड apt-get. देखिए खुद ही लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज मैंने पिछले उसमें ये सारी टाइप की थी, तो ये हिस्ट्री को याद रख रहा है. बट एनीवे, apt-get update मैं ये लिखूंगा. होल्ड ऑन, सॉरी, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए. apt-get update. तो देखें, ओके, apt-get ओके. देखिए मैंने पहले apt-get update टाइप किया तो डिडंट टेक इट. फिर मुझे टाइप करना पड़ा sudo apt-get update. तो देखिए इसके अंदर ये डाउनलोड कर रहा है. ठीक है ना. ये बेसिकली विंडोज़ का वही होता है ना. हम विंडोज़ में कहते हैं कि भाई डाउनलोड करो पर इंस्टॉल नहीं करो अपडेट. ये वो हो रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है पर इंस्टॉल नहीं कर रहा है. मुझे sudo क्यों टाइप करना पड़ा? मुझे sudo इसलिए टाइप करना पड़ा. sudo इज अ सुपरवाइजर एक्सेस, मीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस. कैली लिनक्स जो है, तभी मैंने बताया ये दिस इज अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ लिनक्स. तो इसके अंदर एडमिन राइट्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट. अगर आपको कुछ भी एडमिन की एक्टिविटी करनी है तो यू हैव टू टाइप sudo. ठीक है ना. sudo मतलब कि आप ये कमांड को, apt-get वाले कमांड को एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करें. तो ये रिस्ट्रिक्शंस है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस. ये खाली सुपरवाइजर शुड बी एबल टू रन इट. ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये उसने सारी ये अपडेट्स जो हैं डाउनलोड कर दिए हैं. इसमें देखें भाई, ये नोड वीपीएन का कोई अपडेट है, फिर ये कैली का कोई अपडेट है 30 KB का, फिर ये कैली का दूसरा देखें मेन पैकेज 19 MB का इसने डाउनलोड किया है, फिर कोई कंटेंट्स डाउनलोड किए हैं 43 MB के. वैसे ही अलग अलग ये थोड़े बहुत इसके अपडेट हैं, पर ये अपडेट मैंने अप्लाई नहीं किए हैं, मैंने खाली डाउनलोड किए हैं. अभी इसको मुझे करने होंगे इंस्टॉल या अपग्रेड. वो कैसे करूँगा? आई विल टाइप इन sudo apt-get. अब अपडेट की जगह में लिखूँगा अपग्रेड, मतलब कि भाई अभी इसको इंस्टॉल करो. तो ये अभी देखें इंस्टॉल कर रहा है, बोल रहा है. ये लास्ट वाला सेक्शन आप पढ़ें यहाँ पे. After this operation 123 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? Yes. I press Y and hit enter. अभी उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा. तो ये था apt-get
फॉर पैच मैनेजमेंट। अगर आपको याद हो, हम ये पैच मैनेजमेंट जो कर रहे थे हमने ये वाली की। नेक्स्ट जो है आई वांट सी शेल और टर्मिनल, जो कि पीछे चल रहा है वो टर्मिनल ही है। Another thing we can cover is I can cover some of these commands too. So पीछे अपडेट चल रहा है, उसको चलने दें, and I can show you all these commands. Okay, good. अच्छा, लिनक्स के अंदर एक फ़ायदा ये है कि देखें, मैंने ये खोला, यहाँ पे तो अपडेट चल रहा है। चलो भाई, चलने तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी विंडो भी खोल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो। hold on, where is my root terminal emulator? अरे नहीं यार, ये रहा। तो दो टर्मिनल मैंने खोल दिए, एक तो टर्मिनल के अंदर पीछे अपडेट चल रहा है, अभी मुझे तो दूसरी कमांड लिखनी है, टाइम नहीं है ना, तो आई कैन जस्ट ओपन एंड शो यू हियर। तो पीछे अपडेट चल रहा है, उनको चलने दे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो कमांड हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो थी, हम अभी हैं होम डायरेक्टरी के अंदर। मैं टाइपिंग करूंगा ls और मैं एंटर करूंगा, तो ये मुझे बता रहा है, देखो भाई ये सारी डायरेक्टरीज है। जो ब्लू के अंदर आपको शो कर रही हैं वो हैं फोल्डर्स, ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरीज। जो रेड के अंदर आपको शो कर रहा है, इट्स ए फाइल, इट्स ए फाइल मीनिंग ये जिप्ड फाइल है। देखें जिप लिखा हुआ है ना, ये कंप्रेस्ड फाइल है। तो ls से ये होता है। अब cd से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी, अभी मुझे कहाँ जाना है वो मैं ऊपर देख रहा हूँ, ये जो ब्लू है ना, ये डायरेक्टरीज है सारी। और लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब ये जैसे डाउनलोड लिखा हुआ है या म्यूजिक लिखा हुआ है, कैपिटल ही होना चाहिए। मैं उसको छोटा लिखूंगा, लेट्स सी इफ इट गोज इन। यू सी, बोला है कोई डायरेक्टरी नहीं ऐसी, लेकिन मैं उसी म्यूजिक को कैपिटल M करके लिखूंगा, सो इट शुड गो इन। कैसे पता चला, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिक/म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक की डायरेक्टरी में हूँ। अभी मुझे जानना है कि इस म्यूजिक की डायरेक्टरी के अंदर और क्या क्या है, तो आई एम गोना टाइप इन ls। कुछ भी नहीं है, खाली है। अभी इस डायरेक्टरी से मुझे बाहर निकलना है, तो मैं टाइपिंग करूंगा cd स्पेस डॉट डॉट, मैं बाहर निकल गया। ये कमांड जितनी अभी मैंने ls के अलावा ये कमांड जो मैंने बताई है वो सारी कमांड प्रॉम्प्ट में चलती है, सेम है, विंडोज़ में भी सेम है। यस, अभी मैं अगर जाता हूँ cd डाउनलोड, अभी फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डाउन और मैं टैब दबाता हूँ, तो वो डाउनलोड्स पूरा लिखा हुआ आ जाता है खुद ही। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, इसमें ये ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है D के नाम के दो फोल्डर्स हैं, एक है डाउनलोड्स और एक है डेस्कटॉप। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट D, तो और मैं टैब दबाता हूँ, तो बोल रहा है कि भाई D नाम की 3 डायरेक्टरी है, कौन सी करूँ मैं। तो मैंने कहा यार उसका नेक्स्ट नाम लेटर होना चाहिए O। फिर मैंने टैब दबाया, बोला DO के नाम की 2 डायरेक्टरी है, कौन सी चाहिए तुम्हें। देखा, तो दिस इज गोइंग इन the priority mode, like alphabetical, first alphabetical और कौन सी डायरेक्टरीज नेक्स्ट आती है। नाउ इफ आई टाइप इन C and then I hit tab, वो उसको फिल कर देगा खुद ही, and then I hit enter, I am in documents, click ls, type ls, there's nothing in there। और पीछे let's see what's going on, there are services installed in your system which need to be restarted, libraries okay, upgrade distance interrupt, okay, no that's fine, so we can restart if need be। चले पीछे वो चलता रहेगा। सो ये अपना हो गया ls and cd। फिर हमने बताना था, चेक करना था pwd। ये देख रहे हैं, ये आपको शो कर रहा है कि ये आप कहाँ पे हैं। अभी मेन जो है वो है होम, फिर उसके बाद है कैली, फिर है डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपकी है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी नोन एज pwd। ओके, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। ls हमने किया तो ये आया, विल डू ls हाइफन कैपिटल F। देखें जहां जहां ये जो आपको स्लैश शो कर रहा है, दीज आर द फाइल्स
डायरेक्टरीज, जहाँ पे नहीं कर रहा है इट्स अ फाइल, जहाँ पे स्टार शो करे, जो कि नहीं, बिकॉज देयर इज नो एग्जीक्यूटेबल फाइल इन हियर, वो आपको स्टार शो करेगा, जो भी लिंक होगा वो आपको शो करेगा ऐड। तो लेट्स मे बी आई कैन गो इन वन ऑफ द फाइल्स एंड मे बी यूल सी। हाँ, तो इसके अंदर देखिए डॉट टी एक्स टी है एंड स्टफ। सो इफ आई डू एल एस एफ, इसमें एग्जीक्यूटेबल नहीं है। यूजुअली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर नॉट अवेलेबल इन लिनक्स, बट let's see if I do lsf, हाँ आ गई ना। देखें एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट एस एच स्टार लगा हुआ है इसके आगे, आई नो दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। एन जी रॉक स्टार लगा हुआ है, आई नो दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। एट कहीं नहीं दिख रहा बिकॉज आई डोंट हैव एनी लिंक्स इन हियर, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग यू। क्लियर से वो सारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। ओके, we'll go to the next. Let's see what is the next command they're talking about here. lsl. So ls hyphen l ये कॉलम के अंदर आपको शो करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है इमेजेस का ये फोल्डर है, ब्लू के अंदर आपको वो दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये राइट हियर, दीज आर द परमिशंस। वो नहीं मैं बता रहा था chmod, ये परमिशंस है उसकी। परमिशंस इसको रीड कैसे करते हैं? आर का मतलब है रीड, डब्ल्यू का मतलब है राइट, रीड राइट रीड राइट। काफ़ी जगह जो होगी, जैसे ये जो है ये खाली रीड रीड है, ठीक है। ये देखें आर आर रीड रीड, और आर डब्ल्यू इज राइट, रीड और राइट भी कर सकते हैं। तो दीज आर द परमिशंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। I cannot change any permission here because it's a production Linux, so that will create some problem. अच्छा, दूसरी जो कमांड थी I wanted to look at was we can maybe do this. दूसरी कमांड we were looking at was mkdir। अगर आपको पता हो, मैंने लास्ट टाइम इसको बताया था। मैं जाऊंगा म्यूजिक के अंदर because there is nothing in, actually let me go in downloads, because there is nothing in downloads. Oh, there is something in downloads, never mind, I don't want to make it here. Let's go to music. ऑलराइट, सो मैं हूँ अभी म्यूज़िक के अंदर। म्यूज़िक के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, किसी को पता है? हम डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी स्पेस, किस नाम से बनाऊँ मैं डायरेक्टरी? ओके, वी कैन टाइप इन CompTIA, एंटर, उसने बना दी है डायरेक्टरी। आई टाइप इन ls, वो देखिए CompTIA जो ब्लू के अंदर शो कर रहा है, इट क्रिएटेड अ डायरेक्टरी। अभी मैं जाऊंगा, I want to go into that directory, so I'm going to type in cd comp tab, ये मुझे CompTIA के अंदर ले गया। अब if I want to come out of it, I will do cd dot dot and I'm seeing the CompTIA again. Now if I want to remove it, usually rm is used for file, but yeah, see, directory cannot be deleted like that. So let me see, delete CompTIA, not found. Hold on, ये help क्यों नहीं आ रही? help आनी चाहिए ना इसकी। move wait 1 minute, let me just take a look at something real quick.
Okay, so it should be R. Oh no, I mean I need to go to music में डाला था ना मैंने. So if I do rm hyphen r CompTIA A, so r remove rm hyphen r, फिर उस डायरेक्टरी का नाम मैं लिखता हूँ. So it should be deleted. As you can see, it's deleted. Usually rm जो है ना, वो अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी हो, so you just type in rm and then उस फाइल का नेम, फाइल नेम डॉट एस एच या डॉट एक्स जी या जो भी उसका फाइल का नेम हो, यू टाइप दैट एंड विल डिलीट इट. बट जो डायरेक्टरी है यूजुअली वो डायरेक्टली ऐसे नहीं रिमूव होती. यू नीड दैट हाइफन आर एंड देन स्पेस दी CompTIA और जो भी डायरेक्टरी का नेम है, इट विल रिमूव दैट. पर अब तो डायरेक्टरी नहीं है, बिकॉज इफ आई गो क्लिक ऑन ls there is nothing in there. So alright, let me go back. There is something here, obsolete major version 14. The person is obsolete but server on client package are still installed. Please install the latest package. Teams this is cluster. Okay, तो ये मुझे I have to just make a backup of this real quick. Okay, we'll come back to that later. It's okay. Let it do its thing. Okay. Now let's see what do we have for the next command. Directory listing हो गई, directory listing हो गई. Okay, so we were here, we did the directory listing, right? So hold on. Yeah, we were here. Okay, so lsl directory listing मैंने बताई आपको, वो पूरा कॉलम्स के अंदर शो करता है, और फिर वो आपको rwx read write and copy का भी जो ऑप्शन बताया था, वो 9-letter hyphen indicates no permission for a specific operation on the file. Let me see if they have more in here. Okay, ls dash hyphen a list files whose name begin with a. Alphabetical orders के अंदर अगर आपको डालना हो, you can just type in ls hyphen a. जितनी भी फाइल a से begin होंगी वो आपको शो कर देंगी. फिर changing permissions and ownership. I will see if we can do that for a directory. Use the chmod command to change the permission settings of a file or a directory. Use the chown command to change the ownership of a file or directory. So let's see if I can show you give everyone access. So let me bring that one back. अपना जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ पे ना. So I'm gonna create another directory again. ये पहले से लिखा हुआ आ गया. So let's just okay, CompTIA बन गई. ठीक है. Now I'm gonna see if I can change the permissions on that. So I can do chmod a plus r star. Hold on. Help चाहिए हो, so you can do this. You see chmod hyphen help, or basically it will tell you what you need to do. Cursive silence. Plus r star CompTIA password Kelly invalid mode option. Okay, hold on. Let me see, what am I missing here? Okay, there we go. So A and R gives everyone read access to all the files in the directory. Command मैंने
जो फर्स्ट कमांड मैंने टाइप की वो थी chmod a is to give access to all files plus r read only access. In the document they show you star, but if you're अगर आप किसी specific folder की बात कर रहे हैं then you need to type in that folder name CompTIA and then hit enter. In my case I needed to type sudo because I do not have administrative rights in this flavor of Linux. But either way ये CompTIA को वो वाले options मिल गए हैं. Now if we do lsl, ये देखें ये पहले नहीं आ रहा था ls के अंदर, but ये देख रहे हैं आप, these are the permissions. It's basically mentioning that this CompTIA at 11:21, like literally 3 minutes ago, मैंने उसको ये सारे rights दिए. So I gave it like access rights doing that. Same thing you can do for the files as well. Okay. See, the thing is यहाँ पे they're showing dd copy blocks of data from file to another. I cannot use this on a production machine. apt-get मैंने आपको बता दिया downloads the file from a repository site which is the updates. Shutdown, वो updates अगर पूरे हो जाते हैं then I will type this command and you will see. Kill the process जो है वो process kill करता है. I mentioned that to you. I cannot kill the process right now, but I could show you. Let me see if how we can take a look at the processes. तो हमें processes देखने हो, we can type in ps ax. तो ये जो है basically shows you current set of processes. अभी क्या क्या चल रहा है, जैसे कि विंडोज़ के अंदर होता है ना टास्क बार, टास्क मैनेजर के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस रन करते हैं, ये इसका वही सेम ही है चीज़. पर इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके उसको क्लोज नहीं कर सकता हूँ ना. तो इसको किसी भी चीज़ को हमें किल करना हो, यू हैव टू टाइप इन द PID कौन सी है, ये वाली जो है ना, ये नंबर्स, दिस इज़ अ प्रोसेस ID. सब प्रोसेस के अलग अलग ID हैं. फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऊपर जाते हैं लिटिल मोर, ये देखें ये PID प्रोसेस नंबर 1 2 3 से लेके कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं. हर एप्लीकेशन, हर फाइल के अपने अपने खुद के प्रोसेस हैं. अगर मैं नंबर 3 को बंद कर देता हूँ देन ये प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा. ठीक है ना, आई कैन डू दैट, बट this is currently a production Linux, so I cannot do that. In order for you to kill it, then you use that kill command. Let me see. Yes, okay. Then they're talking about the same password. अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो, आप टाइप इन करें PASSWD and then the password, वो आपका लिनक्स के अंदर पासवर्ड चेंज कर देगा. SU is start a new shell as another user. दूसरा, if आपको टर्मिनल के अंदर एज अ दूसरा यूजर कनेक्ट होना है तो you type in SU. Sudo allows you to run a command as another user, which is a root user, an administrator user. So it allows you to run it that way. Okay, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ वहाँ पे. Okay, ये अब जो आ रहे हैं ये लोग, they're coming up to a network side of these things. So let me go here. I'm gonna delete this. To delete it, I'm gonna type in rm-r CompTIA, and boom, it got deleted. There's nothing in there. Okay, clear. और पीछे भी I think it's all done. Let me just confirm. Installing new version. Integers. I don't see any errors. Usually errors जो है ना red के अंदर कुछ show करेगा या different color में. So I don't see any errors. So I can close this. Okay. अभी हमें मालूम करना हो कि first of all इसके अंदर कितने network adapters लगे हुए हैं, meaning Ethernet cards. उसकी कमांड है ifconfig. कमांड प्रॉम्प्ट में क्या टाइप करते हैं हम, ipconfig, राइट. लिनक्स में क्या टाइप करते हैं, ifconfig. अगर अभी डिपेंड करता है कौन से फ्लेवर का लिनक्स है आपका, दैट्स अनदर थिंग. जो मेन लिनक्स है ना, जो जैसे रेड हैट इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू, बट
उन्होंने सारा चेंज किया हुआ है, उसके जो कमांड्स हैं वो चेंज की हुई हैं, उसकी फाइल्स चेंज की हुई हैं, सो यू कैन नॉट टाइप इफ कन्फिग। पर एनीवे यूबुंटू एंड जो जो मेन जो फ्लेवर्स के लिनक्स है ना, इफ कन्फिग इज द रेगुलर कमांड। अच्छा, यहाँ पे शो कर रहा है ETH 0। ETH 0 का मतलब है ईथरनेट, ईथरनेट 0। ये आप जब भी नेटवर्किंग करेंगे लिनक्स सिस्को के अंदर, किसी भी फायरवॉल के अंदर, ये यू विल सी दिस ETH 0 मीन्स ये पहला अडेप्टर है, स्टार्ट्स विद 0। लिनक्स स्टार्ट्स विद 0। विंडोज के अंदर यू विल सी 1, उसमें बोलेगा नेटवर्क अडेप्टर 1, नेटवर्क अडेप्टर 0 कभी नहीं बोलेगा विंडोज़ के अंदर। पर लिनक्स के अंदर जो पहला जो अडेप्टर शो का होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो वो है ETH 0। ये जो है ये है LO मीन्स लूप बैक। लूप बैक का मतलब है, देखें ये लिखा है ना लूप बैक। लूप बैक का मतलब है ये लूप बैक की IP विल ऑलवेज बी दी सेम। लूप बैक का मतलब है कि ये जो लिनक्स का जो सिस्टम है, अगर मैं इस लिनक्स के ऊपर कोई वेब सर्वर फॉर एग्जांपल रन कर रहा हूँ, तो मुझे वो वेब सर्वर को मैं कैसे एक्सेस करूँगा। उसको एक्सेस करने के लिए मैं ये आईपी डाल के उसका पोर्ट नंबर डालूँ तो आई कैन एक्सेस इट, या तो मैं इस मशीन का जो होस्ट नेम डालूँ, लेट्स सी इफ हु माय वर्क्स, हाँ इस मशीन का होस्ट नेम मैं डालूँ और उसका पोर्ट नंबर डालूँ, आई कैन वर्क। सो बेसिकली any network application working on this server itself, if I want to access that on a browser, I could go through a loopback IP. That's one purpose for that. ठीक है, we'll come back to that later on though. अब जो Ethernet 0 है, आप देख सकते हैं iNet, this is their the interface IP of this ETH 0 इंटरफेस। उसकी IP क्या है 10.0.203.64। उसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। उसकी ब्रॉडकास्ट IP क्या है 10.0.203.255। इसका जो iNet जो 6 बेसिकली बोला है ना, दिस इज IPv6 एंड IPv4। ये iNet जो जिसमें खाली iNet लिखा हुआ है वो है बेसिकली IPv4 विंडोज़ के अंदर, और iNet 6 जहाँ पे लिखा हुआ है दिस बेसिकली मींस IPv6 इन विंडोज़। आप IP देख लें, ये जो मैक एड्रेस है और जो IP है ये IPv6 की है। ठीक है, नाउ ये जो है ईथर, ये दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस ईथरनेट अडेप्टर, ये उसका मैक एड्रेस है। ना माइंड यू दिस इज ए वर्चुअल मशीन, ये फिजिकल अडेप्टर नहीं है, ये वर्चुअल मशीन है। उस वर्चुअल मशीन के अंदर ये मैक एड्रेस एलोकेटेड किया हुआ है। दिस इज ऑल ऑटोमेटिकली जनरेटेड मैक एड्रेसेस। आई मीन इफ आई वांट, मैं मैक एड्रेस को चेंज करके आई कैन गिव इट व्हाटएवर नेम आई वांट। दिस इज कॉल्ड मैक एड्रेस स्पूफिंग। हैकिंग के लिए वी डू दैट, हम मैक एड्रेस चेंज करके हम उसको कर सकते हैं, बट दिस इज इन ऑटोमेटिकली जनरेटेड ईथरनेट मैक एड्रेस। ठीक है, RX ये नेटवर्किंग के अंदर आपको बहुत ज़रूरी होगा। RX मीन्स रिसीविंग। विंडोज़ के अंदर हम इसको बोलते हैं डाउनलोड। जो हम डाउनलोड करते हैं वो हम रिसीव करते हैं ना, हमें मिलती है। तो नेटवर्क की टर्म के अंदर उसको बोलते हैं RX, रिसीविंग। TX मीन्स ट्रांसमिटिंग। विंडोज़ के अंदर हम उसको बोलते हैं अपलोड। सो जो अपलोड करते हैं वो हम बाहर दुनिया में भेजते हैं, कहीं किसी को भेजते हैं वो हम अपलोड करते हैं। दैट्स वी आर ट्रांसमिटिंग, तो वी आर ट्रांसमिटिंग आउट। रिसीविंग डाउनलोडिंग, वी रिसीविंग इन। अब आप इसके अंदर देखें, ये जो पहली लाइन है इसके अंदर मुझे बताता है ये कि मैंने 1.6 GB वर्थ ऑफ नेटवर्क मैंने क्या किया है, डाउनलोड किया है, रिसीव किया है। मतलब मैंने अभी जो वो डाउनलोड की ना सारी एप्लीकेशंस, तो मैंने वो डाउनलोड की 1.6 GB। अभी नहीं डाउनलोड की, ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है। बट जब से ये सिस्टम ऑन है इतना डाउनलोड हुआ है। ठीक है, अपलोड, मैं कोई अपलोड तो कर नहीं रहा हूँ। हम समझते हैं कि भाई हम सर्वर रन, हम विंडोज़ की मशीन रन करते हैं, जो भी करते हैं
आई एम नॉट रनिंग अ सर्वर, तो अपलोड क्यों कर रहा है? बट व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आप जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपका जो सिस्टम है, कोई भी हो, लिनक्स हो या विंडोज़ हो या मैक ओएस हो, वो हमेशा आउटबाउंड कम्युनिकेट करता है। और वो जो आउटबाउंड कम्युनिकेशन चलता है, दैट इज कॉल्ड एन अपलोड। ठीक है। फिर अगर आप ये लिनक्स जो है अपने लैपटॉप पे रन कर रहे हैं या ऐसे डेस्कटॉप पे रन कर रहे हैं जहाँ पे उसके अंदर वायरलेस कार्ड भी लगा हुआ हो, तो वो देखें यहाँ पे आपको कुछ इफ कन्फिग करेंगे तो यहाँ पे वायरलेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है। ये सब हार्ड वायर्ड है, ईथरनेट वायर लगा हुआ हो उसकी इन्फॉर्मेशन है, वाईफाई कहीं शो नहीं कर रहा। सो वाईफाई को मालूम करना हो, देन यू हैव टू टाइप इन iwconfig। W स्टैंड्स फॉर वायरलेस, बट इसके अंदर वायरलेस लगा हुआ नहीं है, सो इट्स बेसिकली सेइंग नो वायरलेस फाउंड, देयर इज नथिंग हियर, आई कैन नॉट शो यू एनीथिंग। अगर मैं इसी को रन करूं लैपटॉप के ऊपर तो इट विल शो मी। So I have to see because I think I did have Linux on there, but anyway, Linux is laptop के ऊपर है, but it's gonna take some time to turn it on, so it's gonna take a lot of time. Anyway, so if config highly recommend आप remember करें इसको, because ये आपको कॉन्फ़िगरेशन में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको क्विकली बताना चाहता था, वो है इट्स कॉल्ड route dash n। यस, विंडोज़ के अंदर इस कमांड को बोलते हैं route स्पेस print। हम टाइप करेंगे विंडोज़ में तो ये शो करेगा, पर लिनक्स के अंदर इट्स कॉल्ड route स्पेस -n, मीनिंग आप नेटवर्क का राउट शो करें। अब ये इसको पढ़ते कैसे हैं? अब सबसे पहले देखें, ये जो 00 आपको शो कर रहा है ये डेस्टिनेशन के अंदर है। 000 का मतलब है एवरीथिंग। मुझे पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करना हो, दैट्स 000, बिकॉज इसके अंदर मैं कोई स्पेसिफिक आईपी असाइन नहीं कर रहा हूँ। मुझे कहीं पे भी जाना हो तो ये 00 को फॉलो करूंगा, इट शुड टेक मी देयर। सो दैट इज कॉल्ड द मेन गेटवे आउटबाउंड जाने के लिए। पर ये जो गेटवे आपको दिख रहा है ना 10.0.203.1, ये गेटवे है अपना फायरवॉल का गेटवे। मीनिंग ये कंप्यूटर जो है सबसे पहले इस फायरवॉल की आईपी के पास जाएगा, फायरवॉल को पूछेगा कि भाई मुझे गूगल जाना है, मैं जाऊं? तो वो फायरवॉल जो है ये वाली आईपी डिसाइड करेगी कि ये 00 आईपी पे जाए कि नहीं। तो जब हम ट्रबल शूट करते हैं हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि भाई हमारा गेटवे क्या है। अगर ये गेटवे आपको दिख नहीं रहा है, विच मीन्स कि आप बाहर की दुनिया से बात ही नहीं कर सकते। ये आपके घर का मेन एंट्रेंस डोर है। अगर ये डोर को आप बंद करके कंक्रीट का सीमेंट लगा दें, आप दुनिया से बात ही नहीं कर सकते हैं। ये अगर नहीं है आपके प्रॉपरली सेटअप, देन यू कैन नॉट गो आउट। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो दैट्स दैट। Let me see दूसरी command what they're talking about here. Okay, अभी इसके अंदर another thing I want to show you similar to Windows। मुझे चेक करना हो कि भाई मेरे पास इसके ऊपर इंटरनेट है कि नहीं। I can do ping. Ping is a very common and very highly used command. ये देख रहे हैं I'm receiving a response. So let me stop this because Google, let me stop this. Microsoft Windows के अंदर वो 4 बार पिंग करके स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली। लिनक्स के अंदर it will continuously ping until you stop it. विंडोज़ के अंदर हमें अगर कंटिन्यूसली पिंग करना हो तो हम टाइप करते हैं ping स्पेस google.com स्पेस -t। t मीन्स टाइम। ठीक है, लिनक्स में ये नहीं है। लिनक्स में आप जब टाइप करें पिंग स्पेस google.com वो नॉन स्टॉप पिंग करता रहेगा। बट इसके अंदर देखें ये मुझे रिस्पांस दे रहा है। TTL का टाइम है 97 सेकेंड्स, 90 नहीं नॉट 97 सेकेंड, 97, एंड टाइम जो है 7.71.1 millisecond, which is okay, not that bad, 80 millisecond. I mean, I like to see like 3 milliseconds, 4-5 milliseconds, but because ये जा रहा है from couple firewalls, that's why it's a little bit slow. Now, if I type in, let's say, something I want to make sure that it does not ping, so I type in, let's just say, देखें कोई एड्रेस ही नहीं है, तो वो होस्ट ने उसने फाइंड ही नहीं किया। ठीक है,
Now if I want to do route google.com, होल्ड ऑन, इसके अंदर क्या है, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट में टाइप करते हैं ट्रेस, वी टाइप दिस कमांड राइट, इसके अंदर वो कमांड नहीं है, आई थिंक वी टाइप इन ट्रेस राउट, या ट्रेस राउट google.com। सी ये बहुत जल्दी इसने ट्रेस आउट किया है। गूगल के माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम देखते हैं ना बहुत स्लो स्लो स्लो, एक आता है दो आता है, इसने बहुत जल्दी विद इन फ्यू मिली सेकेंड इसने ट्रेस आउट कर दिया। भाई ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, कितने सर्वर से हॉप कर रहा है, shows you everything. I want to clear that out because it has a lot of information in here. Okay. After this, we want to look at DNS. Let me see if this command works. Hold on. All right. Yes, this command will work. nslookup google.com. nslookup क्या शो करता है, डोमेन नेम शो करता है। तो सर्वर, ये सर्वर कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है डोमेन नेम की, इस वाले सर्वर से 20867222222। ये है सिस्को के डीएनएस सर्वर। बिकॉज ये मशीन जो है लिनक्स सिस्को से कनेक्टेड है, सिस्को को ये पूछ रही है भाई ये google.com का डीएनएस लुकअप मुझे बताओ। तो नॉन अथॉरिटेटिव आंसर दे रहा है। नॉन अथॉरिटेटिव आंसर का मतलब ये है कि ये गूगल से डायरेक्टली पुल कर रहा है। ये आंसर इस लिनक्स की मशीन के अंदर पहले से सेट नहीं है। लिनक्स के अंदर जो डोमेन नेम सेव हैं उसके अंदर गूगल का कुछ पता नहीं है कि गूगल की आईपीस क्या है। दैट्स व्हाई इट्स गिविंग यू दिस नॉन अथॉरिटेटिव बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम गूगल सेल्फ। सो गूगल की वो आईपी शो कर देता है डीएनएस की, और ये IPv6 भी शो कर देता है आपको विद द मैक एड्रेस एंड ऑल दैट। ओके, सो दैट्स सिमिलर कमांड्स टू व्हाट वी हैव इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एंड ये जो मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ दे आर नॉट मेंशन इन द CompTIA पार्ट thoroughly, but let me see if I can show you. हाँ, एक दूसरी जो कमांड आपको बहुत काम आएगी आगे जाके, इट्स कॉल्ड netstat। मुझे लेट्स सी, आई एम गोना टाइप इन हेल्प, तो मुझे बताएगा कि netstat के अंदर मैं क्या क्या टाइप कर सकता हूँ। सो लेट्स सी, मुझे आई वांट टू फाइंड आउट netstat के अंदर I can do route, group, statistics, verbose. I'm gonna do all. I wanna see everything. Okay, so I'm gonna do up arrow, वो टाइप इन कर देगा netstat -a, सब मुझे बता रहा है यहाँ पे, but I need a little bit more information actually. This is not enough, so let me type in netstat -a और n भी ऐड करता हूँ मैं। Let me see. I need to know कि क्या क्या connected है. Let's see. Stream. हाँ, this is what I want to see. तो यहाँ पे देखें मुझे पोर्ट्स नंबर भी शो करता है। तो ये देख रहे हैं आप, बिकॉज देयर इज नॉट मेनी कनेक्शंस ऑन दिस, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक एट। ये है 10.0.203.64 जो है, आई बिलीव इट्स दिस आईपी लिनक्स की। वो पोर्ट नंबर 68 से कम्युनिकेट कर रही है गेटवे को पोर्ट नंबर 67 पे। इस्टेब्लिश मीन्स द कनेक्शन जो है वो अभी इस्टेब्लिश्ड है। तो यूजुअली आप you can see that a lot in Windows as well, but let me see if this command will work. Netstat -n. No, I don't want this. Netstat, if you don't know, help kare aap and then you will see. I don't need numeric. Maybe I need interface. I think I'm gonna put interface next. And let's do route as well. So I'm gonna do netstat listening and route. No, let's see, netstat.
ये सारे लिसनिंग शो कर रहा है. What's the other one? Interface. Oh, अच्छा, ये हाँ, दिस इज अ गुड वन. सो द इंटरफेस के अंदर बेसिकली दिस इज शोइंग मी कि अभी करंटली इसके अंदर इसकी ये क्या डाउनलोड कितना कर रहा है और ये ट्रांसमिट कितना कर रहा है, अपलोड कितना कर रहा है. इसका बेसिकली जो लाइव स्टेटिस्टिक्स है ना इंटरफेस का, वो मुझे शो कर रहा है. अगर मेरे पास वायरलेस लगा होता तो वो भी शो करता, बट आई ओनली हैव ईथरनेट 0, सो उसका इंटरफेस का स्टेटिस्टिक शो कर रहा है कि भाई while you are working on this you are using this. This is in bytes, this is not in kb, this is not in, so this is in bytes, so this is about I think 3 MB or something, or 3 MB or something, yeah, similar. So ये आपके हो गया netstat की command. Then we have another command called arp. You can do arp if you like, just arp. arp का मतलब है जो आपके जो मैक टेबल है ना वो शो करता है कि मैक टेबल इस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कनेक्टेड है. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई हैव 57, 50 and 56 under this MAC address, under this MAC address, under this MAC address. सबके MAC address अलग है. Basically it shows me that this Kali Linux जो है इस MAC address से, इन MAC addresses से communicate कर रहा है. If I do, because the thing is हम हैकिंग के अंदर वी कैन डू आर्प स्पूफिंग. हम क्या कर सकते हैं कि आर्प की जो ये मैक एड्रेस दिख रहा है, इफ आई डू लाइक मैक स्पूफिंग करके आई कैन रेप्लिकेट ये मैक एड्रेस एज माय मैक एड्रेस, एंड देन आपके इस सिस्टम के अंदर मैं आपको आपके इस सिस्टम को ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो आईपी आपको दिख रही है 10.020350 विद द मैक एड्रेस, ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ये गलत है, मेरा जो है वो सही है. ड्रॉप दिस एंड चूज दिस. दिस इज कॉल्ड deauth attack using MAC spoofing and DNS MAC spoofing and the DNS spoofing. तो ARP जो है वो शो करता है कि आपकी डिवाइसेस कौन कौन से मैक एड्रेसेस से कनेक्टेड है. इफ यू फाइंड ए मैक एड्रेस इन हियर व्हिच यू डोंट रियलाइज हु इट बिलोंग्स टू, that means there's something else going on. You need to make sure that you're only connected to the ones you should be connected to. If I do arp dash dash help, it will show me the help. What else I can use? Let's see. Display. I can probably do. Not do E. ये इंटरफेस के साथ शो करता है. So ARP is basically used for that. Host name, yeah, this you need to know. जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो जो लूप बैक एड्रेस है, इन ऑर्डर फॉर यू टू एक्सेस एनीथिंग जो आपके सर्वर के ऊपर रन कर रहा है, आपको टाइप इन करना पड़ेगा या तो लूप बैक एड्रेस आईपी या तो ये होस्ट नेम. होस्ट नेम क्या है मुझे नहीं पता. तो in order to find out the host name, you type in the host name and it will show you Kali. Kali is the host name. I can type in whois. Actually, whois is a very good command. I was looking at who am I, but hold on, I will show you about this too. Whois जो है हमारा जब हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं टू सर्च ए वेबसाइट इंफॉर्मेशन, लिनक्स इतना अच्छा सिस्टम है ना कि आप सारी चीज़ें डायरेक्टली इसके ऊपर कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल आई कैन डू whois.google.com. ये गूगल का सारा जो डेटा है ना, whois का इंफॉर्मेशन, वो सारा मुझे यहाँ पे देगा. आप देखें, गूगल के मुझे सारे नेम सर्वर बता रहा है, गूगल किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो बता रहा है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया में, यूएस के अंदर है, गूगल ऑर्गेनाइजेशन है, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है. दिस इज बिकॉज दिस इज सिमिलर टू, लेट मी शो यू. When I go to whois information, yeah, if I just type in whois, right, Google के अंदर if I type in whois, and
काफ़ी आप लोगों ने ये I'm pretty sure some of you have used this service. हम जाते हैं whois के अंदर just to हमें मालूम करना हो कि यार ये हमें I need this website information. तो हम टाइप करते हैं यहाँ पे आके google.com, we do search और वो काफ़ी टाइम लगाता है whatever it does. Hold on, is this a whois? No, this is not whois. ये तो basically आपको domain buy करना हो. This is whois right here. So let's say if I type in google.com and search, लिखा हुआ है ना whois domain lookup. If I do search, ये सेम इन्फॉर्मेशन देगा जो उसमें मुझे दे रहा है. देखें सेम ns lookup ns name server है. देखें google llc, ये आपको है ना ऑर्गेनाइज करके दे देता है अच्छा सा. बट अगर आपके पास GUI का एक्सेस नहीं है, यू कैन पुल अप ऑल ऑफ दिस. ये देख रहे हैं ये जितना भी डेटा है ना, ये सेम डेटा है. ये लिनक्स से उन्होंने पुल किया है बिकॉज वैसा ही लग रहा है. यू कैन सी, आप देखें पीछे जाके ये सेम है, सेम डेटा है. तो whois is a very useful tool. आप because if you want to get some information on companies or anything, let's do loyaltechsecurity.com. Let's see what we get. You see, you get the domain name, GoDaddy registration, whatever. It should also actually tell you the name servers. Let me see. Yep, right here. Name server, Cloudflare. You see, it's a proxy. समझे? This is proxy. So anyway, proxy means it's hiding, but Cloudflare के server this shows you. It shows you everything right here directly from Linux. आपको कहीं और जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है. Linux will show you all of that. Okay, next command we want to work at is, let me see if something more interesting. हमने ns lookup कर लिया, हमने route किया, we did host, arp, iwconfig, hostname, whois कर लिया. So yeah, we actually covered a lot of commands here. Yeah. Okay, so that is basically how you use Linux. Hopefully ये command आपको याद रहेंगी. I would highly recommend कि आप, Linux is a free system. Anyone can download it, anyone can install it. I would highly recommend that आप install करें इसको अपने system पे just to test it out and try out these commands. I think it will be a huge help for anyone who's trying to learn this. Let me see, I need to close this. I can't find. There we go. Control enter. Let's redock it. Okay, so that was the somewhat of a practical we just saw on how to use Linux, how to go around Linux and things like that. If we go back to our session, I think that was, yep, that was the last page. So we have covered sudo well, we're not changing any password, but in order to change the password you can आप ये command type कर सकते हैं, ifconfig and iwconfig, and on top of that मैंने आपको additional जो commands बताई हैं for network purposes, we have used it here. Try to remember these commands. अगर आपको याद नहीं रहती हैं, try करें आप अपने system के अंदर. Linux अगर आपके पास नहीं है, you can download it. It's very easy to download it. You can just go to any browser, just type in Ubuntu download करें. I will tell you that Ubuntu, actually just say download Ubuntu. ठीक है, ये Ubuntu पे ले जाएगा आपको. Download Ubuntu desktop. I recommend downloading desktop version because most of the people, it's hard for them to use command line all the way. So Ubuntu 22.04.1 जो है वो डेस्कटॉप इट्स अ GUI वर्जन, मीनिंग आप उसके अंदर माउस, जैसे अभी आपने देखा ना, कहाँ गया मेरा, लेट मी सी, ये जो है ये दिस इज अ GUI वर्जन बिकॉज दिस आई कैन
I can go into the system, I can go to the file system, I can click here, I can go to these files. This is a GUI version. I can do all of that in here. So I recommend you getting a GUI version, which is a desktop version. You can download it for free and then you can install it. I believe I do have several windows how to install, but अगर आपको नहीं पता, you can, there's a guide right here how to install Ubuntu. Okay, free version, download it, experiment on it, and I think you're gonna enjoy it. You can do a lot of things. इसके अंदर server भी आप run कर सकते हैं. Ubuntu is very it's open. ठीक है. So for now, I'm going to end this session here. This was our chapter number 18 related to Linux and Mac OS X. ठीक है. If you guys have any questions or concerns, any comments, please make sure to type them in the comment section or type it in the chat for immediate reply. Make sure to like and subscribe to the channel and hit that bell notification icon, so every time I upload or initiate a live session, you guys are aware of the new links coming up. Okay, तब तक